everyone. Welcome to Access. This is where we bring subject matter experts to discuss some of the most riveting issues of our times. Today, we will welcome Mr. Talha Huda, Executive Director, Infor Digital with Hum Group of Companies. Welcome here. Thank you so much for your time. Thank you for having me. Today, we will be discussing digital narratives, the shift in mediums and how social behavior is mapped. So basically काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि एक टाइम पे बूम आया सोशल मीडिया का और सबसे ज़्यादा हमने उस चीज़ को देखा ड्यूरिंग द अरब स्प्रिंग्स किस तरह सोशल मीडिया एक एक्टिविज़म का टूल बना और फिर एट द सेम टाइम हमने देखा कि डिसइंफॉर्मेशन की भी काफ़ी सारी चीज़ें सरफेस पे आती हैं और इन सब चीज़ों ने बहुत इम्पैक्ट किया है जो हमारे मीडियम्स हैं उनको भी उनकी ग्रोथ को और लोग उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी परहैप्स इफ़ यू कुड मेक अस अंडरस्टैंड कि ये जो शिफ्ट आया है फ्रॉम प्रिंट टू ब्रॉडकास्ट टू डिजिटल क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आया है विद रिगार्ड्स टू हाउ नैरेटिव्स आर मेड So, thank you for having me, Javairyah. एक नई टर्म कॉइन हुई है आजकल, मैं नोटिस कर रहा था डिजिटल मीडिया पे. सो लेगेसी मीडिया इज़ नाउ कॉल्ड MSM. ओके सो दिस टर्म इज़ बीइंग बम्बार्डेड. वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा से कहते हैं, बट स्पेसिफिकली विद दिस टर्मिनोलॉजी is being used in a negative context where you want to describe a deficit of trust. ओके So that explains the problem जो जो अब बेसिकली पैराडाइम शिफ्ट आया है कुछ अर्सा पहले तक जब सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया वाज टेकिंग इट्स रूट्स तब ये इशू था कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इट वाज जस्ट लूजिंग its strength as a platform because it was one-way communication. It wasn't as enticing as having a two-way communication medium. Right. Or obviously there's a whole spring of digital democracy where everyone has devices. तो वो accessibility की वजह से भी हुआ. So अगर हम chronologically देखें तो newspapers have been there for about over 1.5 century. बहुत popular जो रहे जो over 1.5 century बहुत popular रहे newspapers. And then in the 90s अब हम बहुत ज़्यादा रेडियो को डिसरिगार्ड कर देते हैं जब भी हम मेन स्ट्रीम मीडियम्स की बात करते हैं तो रेडियो हैज़ ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the dissemination of narratives. हमने throughout the 50s 60s different wars में बहुत ज़्यादा radio was crucial as a medium. But खैर speaking of television ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान देखा जाए तो from the late 50s to the late 90s there was only primarily BTV. State television tha. State television was very easy to manage. One-way communication है, whatever narratives you want disseminated वही disseminate होंगे और कुछ नहीं होगा. मतलब there's you don't really have a choice in expanding your scope of understanding. राइट When private media came, that is where the shift started. The first shift started about 20 years ago. 99 May 2000 2001 में private media channels came in. Geo, Airby, a few big groups that launched from overseas and then came to Pakistan. They established their roots. Initially they were just doing a couple of bulletins a day. Uske baad then they became separate news channels, and then there's the second spring came in 2006 and then 2008 and then 2013, and then it became synonymous with the election cycle. राइट But very quickly it started losing relevance in 2012-ish जब social media पाकिस्तान में ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बूम पकड़ना शुरू हुआ. ख़ास तौर पे Facebook had become a popular platform by then, and then Instagram came along, and then Twitter. The most recent phenomena जो हमारे सबसे popular platform है it's TikTok. It's about 70 million and rising. उसकी जो user base है वो बहुत ज़्यादा है, uploads बहुत ज़्यादा है, consumption बहुत ज़्यादा है. अब the way that we consume information has changed to an extent that हमारी जो daily की average है that's about 4 hours a day on social media. And if we talk about video medium की average view duration जो है वो 10 seconds है. तो you're consuming 1440 pieces of information per day. वाओ उसका issue ये है कि उसमें से आप कुछ retain नहीं कर रहे, but वो सारा कुछ आपकी peripheral understanding में, peripheral memory में चला जाता है. So this is an interesting shift in the dynamic where mainstream media, legacy media
is has lost its trust factor. सही. People used to think कि आपका अगर टीवी चैनल का लोगो जो है वो credibility की अलामत होती थी, but it's not that anymore. अब uh, with the shift in from mainstream media to digital media, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा prop up की है, that is a severe trust deficit on digital media. You can't trust anyone on digital media. There's no journalistic ethics there. सही. कोई उसके अंदर कोई फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म नहीं है. प्लेटफॉर्म्स ने अपने इंट्रोड्यूस कराया है, ट्विटर ने किया है, कम्युनिटी नोट्स एंड ऑल दैट. बट इवन दैट is you can see that it's a flawed mechanism. एक certain group agrees with something that you're saying, तो वो उसको endorse कर लेगा. If it doesn't, तो उसके नीचे community note कर देगा. तो really there's no fact checking mechanism उस तरह कोई automated नहीं है. Television had its own restrictions. उसके अंदर obviously आप बिल्कुल blatantly you couldn't lie, you could propagate things, you could have biases. आप पैनलिस्ट को या ओपिनियन मेकर्स को बैठा के उनका ओपिनियन आप उनसे पूछ सकते थे. वो ओपिनियन टिल्ट के थ्रू आपको आहिस्ता आहिस्ता डिसमिनेट कर देते थे अपना जो वट एवर बायस कन्फर्मेशन थी. बट डिजिटल मीडिया जो है इट्स अ फ्री फॉर ऑल फील्ड. आपने झूठ बोलना है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट अप प्रोपेगेंडा करना है, कंस्पिरेसी थ्योरीज एंड ऑल दैट. अब दैट व्हाट दैट हैज डन इज के it's made it very difficult to discern fact from fiction. अच्छा, सो इसमें आपने एक बात की थी रिगार्डिंग सिटीज़न जर्नलिज्म और इंडिपेंडेंट तरीके से जो है एक जर्नलिस्टिक तरीके से हर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में. दे आर डूइंग देयर ओन स्टोरी टेलिंग, दे आर ब्रिंगिंग आउट, सो यू हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. और अगेन उसमें यू डोंट नो कि उसमें से कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द मोनेटाइजेशन फैक्टर, कि वो किस तरह से इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है? बिकॉज हमने बीच में ये भी देखा कि योर फॉलोअर काउंट बिकम्स योर क्रेडिबिलिटी. एंड जब ट्विटर का जब से वो ब्लू टिक वाला चीज़ भी हुआ, एनीवन कुड जस्ट बाय दैट क्रेडिबिलिटी ऑफ ट्विटर. सो हाउ हैज़ दैट इम्पैक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड पीपल? एंड स्पेशली अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन की बात करते हैं, विच वी सॉ ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर. How do what's your take on that? It's a very interesting dynamic to explore. So Twitter से ज़्यादा ना जो polarization है it took root on YouTube. Because the fact कि YouTube के ऊपर जो consumption of content है वो से बहुत ज़्यादा है, उसका user base भी बहुत ज़्यादा. बिल्कुल. आज से 2 साल पहले का नंबर था, we consumed about 8 billion videos. 8 billion views हमारे accumulative थे in 2 weeks. 2 weeks time in Pakistan. So we are a nation that watches YouTube, say, properly. So there are also content creators of that volume and mass. और जिस तरह आपने कहा कि जो size है following का, that becomes your credibility. Citizen journalism is a very so how do you define a journalist? A journalist is supposed to be somebody who is reporting facts and keeping the system in check. When somebody who has not had that training or who does not have those bindings of the system के restraints है ना एक certain कि अच्छा आप you can't lie, you can't slander, you can't disseminate anything without fact checking. सही. तो एक citizen के ऊपर उसमें से क्या अप्लाई होता, कुछ भी नहीं अप्लाई होता. So that terminology I disagree with. Citizen journalism. So a citizen cannot be a journalist. A citizen is a citizen who has an opinion. ठीक हो गया. Or is reporting something, some incident that has happened somewhere, and that could be anything off the ground. मतलब it's not the whole idea behind having let's say reporters in the Supreme Court, say, was to have people who had in-depth knowledge of the law, of how the constitution works, of how the courts work. And people were trained in the legacy media. They were trained from being junior correspondents to special correspondents, senior correspondents. They were they trained grow rigorously. In that field. There was this whole system that trained them, that taught them, and obviously then they had connections, they had sources, and they read about it. Say, now you see there are people who are legal analysts who have no basis there. Who have never attended a single court hearing, and then there are people there are hundreds and hundreds of people
on YouTube that have their own vlogs. What basically they do is कि डॉन की या ट्रिब्यून की या किसी भी एक बड़ी किसी मोतबर पब्लिकेशन की कोई खबर लगी हुई है वो उसको उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको रिपीट कर देंगे. सही ऐसे है. ही है. What this does is this, एक तो it softens the credibility of the platform itself कि platform पे कोई भी आप मतलब अब I do not trust anything that I see on YouTube. सही ठीक है. है. Or as a matter of fact on TikTok or Facebook or Instagram or Twitter, anything, because of the fact that there are people who are cooking things up and they have massive followings, and that massive following is उसके अंदर एक certain levels हैं, fans हैं, followers हैं, cult है, and then there are onlookers and then there are critics. वो critics बहुत थोड़े से होते हैं, कहते हैं यार ये झूठ बोलता है regularly. सही. ठीक है. तो कल्ट फॉलोइंग है, कल्ट फॉलोइंग जो है इट्स जस्ट कि यार आएगा और फ़ौरन शेयर करेंगे. फैंस हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, फॉलोअर्स हैं जिन्होंने से फॉलो किया. नाउ द प्रॉब्लम विद दैट सॉर्ट ऑफ क्लाउट जिसकी आप बात करेंगे, फॉलोइंग से आपको लेजिटिमेसी मिलती है, उससे एक तो इट गिव्स यू सर्टन ऑडेसिटी, प्लस जो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ था जितना भी इनफेक्टिव था वो debatable है, but there was a certain system जिसके अंदर there were parameters of reporting and there were parameters of journalism. Now it doesn't exist. It doesn't. So digital media की pros में 10,000 pros हो सकते हैं, but cons में ये है कि it has destroyed the information space as information space. ठीक है. ऑफ कोर्स सोशल मीडिया और इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे वी नो कि a lot of information space got mutilated of sorts, लेकिन थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें कि ऐसे कौन से स्पेसिफिक नैरेटिव्स हैं जो कि सक्सेसफुली बनाए गए थे थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या उनको डीकंस्ट्रक्ट किया गया था पाकिस्तान के केस में, दैट यू फील एक्चुअली हेल्प्ड क्लियर अ लॉट ऑफ द मियाज़मा इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मोर मड. So de-escalation of the polarization, उससे थोड़ा सा पहले there was this one positive moment that happened, if you remember the Zainab rape case. So that was a massive moment जिसकी वजह से there was one case that was blown up and it gained international attention and international pressure on the government of Pakistan to execute that case immediately, execute that perpetrator. That is a prime example of how social justice movements can be very effectively carried out through social media if you have a directional cause. And it also goes to say कि अगर हम de-escalate करना चाहें polarization को, we just need to have certain people that everyone trusts. ठीक है. And those people, if they adapt those sort of cohesive narratives, so it can play a very positive role in our the reconstruction of our society, because as we speak तो हमारा moral fabric जो है थोड़ा सा और आई वुड लाइक टू गो इन डेप्थ विद दिस इज़ बिकॉज ऑब्वियसली जब भी कोई नई चीज़ आती है उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, बहुत सारे लोग उसको जो अंडरस्टैंड नहीं करते वो उस चीज़ को अक्सर जो उसकी रोकथाम में भी लग जाते हैं. एग्जैक्टली. लेकिन फॉर पीपल हु रियली वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द स्ट्रीम फॉर सम बेनिफिट्स इसमें क्रिएटर्स आ जाते हैं. ठीक है. एंड क्रिएटर्स विद रिगार्ड्स टू नैरेटिव बिल्डिंग. सो हाउ डू यू थिंक कि स्टोरी टेलर्स और क्रिएटर्स कैन यूटिलाइज दीज प्लेटफॉर्म्स टू बेटर शेयर perspectives of for Pakistan? इसमें जिस तरह film, television, literature, ये सारी चीज़ें, and your own platform is doing like a wonderful job, in curating those things. तो इसमें challenges क्या हैं उसमें आप, what are like the setbacks, and how do you overcome those for anyone who wants to work in that space? और दूसरी चीज़, what are some of the cultural या political factors that you feel influence this entire process of narrative building with the Pakistani context, of course? So entertainment has always एक तो हमारे यहाँ ना एक false notion है कि infotainment and entertainment की space बहुत shrink हो गई है and all people talk about is politics. It's not true. हम एक बहुत छोटा सा chunk है लोगों का that are affected. Everyone is affected by politics, but that are affected by political narratives. Right. Everyone else, or a very large chunk of people, is disengaged and they're consuming informative नहीं तो entertainment content. सही. Informative content पाकिस्तान बेचना is very difficult. There have been channels जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया. They've spent years and
lots of money, they've burnt lots of money and resources into putting out informational content, educational content. I have severe reservations against the state television, but there is the PTV Education के नाम से भी एक channel जी जी चलता है जी जो कि पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर. Nobody is watching that. There are other private channels that are doing wonders, that are trying to do wonders, but nobody is consuming that. डिजिटल मीडिया में एक फ़ायदा ये है कि डिजिटल मीडिया में सिंस इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, इफ़ आई वांट टू वॉच इट तो आई विल फाइंड इट. ठीक है. उससे ये होता है कि आपको अपनी नीश ऑडियंस मिल जाती है. सही. Obviously it's very difficult trying to find the right kind of and palatable kind of content. You have to come up with some form of novelty. Pakistan, when there's a lot to be done about comedy, people have a penchant for funny things, so Exactly. that sort of thing works. It always works, which is why content creators, खास तौर पे जो people who are doing reels and short form content, so they're very popular and they're very उनकी बहुत ज़्यादा क्लाउड है. But the fact remains कि informative content या organized content regimes बनाने के लिए you have to work a lot into finding out where your audience resides. दूसरा ये कि हमारे यहाँ appetite जो है वो पॉलिटिकल कंटेंट की है बहुत ज़्यादा. ख़ास तौर पे पोलराइज कंटेंट की, लड़ाई झगड़े की बहुत ज़्यादा एपेटाइट. अच्छा. ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये चीज़ जब डिस्कवर की थी उन्होंने, दे स्टार्टेड पुटिंग टुगेदर पैनल्स लाइक दैट. अब ये कि जो प्रोग्रामिंग साइकोलॉजी इट वर्क्स लाइक दैट, you will have a 1+3 format. This is the general 1+3 format where 3 people have a difference of opinion. Because of the fact, it's not because वो लड़ाई दिखाना चाह रहे हैं, it's because of the fact कि people consume that. तो डिजिटल मीडिया पे भी इसी तरह है. डिजिटल मीडिया पे people generally have a palate for polarized discussions and लड़ाई झगड़ा and stuff like that. एंटरटेनमेंट स्पेस में जहाँ तक बात है उसके अंदर भी you would find very relatively lower audiences for programming that is a little low key. Okay. People have a penchant for violent content. बेशक entertainment के लिए curate किया गया, but relatively violent or sad or depressing or too happy. तो वो थोड़ा सा ना we tend to live on poles. Extremes. Yeah. So in terms of what kind of challenges that we encounter is, one, trying to find the right relevant audience. Trying to curate content for the right relevant audience. हमें अगर if I want to do informational explainers, we have to, हमारी सबसे मुश्किल exercise होती है brainstorming topics, because the first and foremost problem that we have as a platform is that we are in the English language. We want to continue that. उसके पीछे एक strategic vision है. Pause. But it's also a huge problem. You can understand that. So to answer your second question about what sort of challenges that we face on a regular basis. On a regular basis as content creators, एज एन इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर आपके लिए एक सर्टन नीश होती है, आपको पता होता है यार डेली क्या कंटेंट क्रिएट करना है. एज अ प्लेटफॉर्म इट्स डिफिकल्ट. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू कम अप विद टॉपिक्स. तो द ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. प्लानिंग अ मंथ. वी आर currently we're posting about 20 explainers a month, over 20 explainers a month, and then we have 2-3 हमारे shows हैं, उनकी अपनी obviously एक content regime चल रही होती है. So the most difficult part right now is brainstorming for topics and trying to come up with topics that are relevant for the public space. Generally, we don't find a lot of English content in Pakistan, तो उसके अंदर we're already operating in a very niche space. Right. उस niche space के अंदर भी we don't want to restrict ourselves to topics that are boring for even those people that can understand English. तो that is a challenge. Political, आपने कहा था कि पॉलिटिकल चैलेंज क्या है. पॉलिटिकल चैलेंज यही है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं टू पॉलिटिक्स. पीपल वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स. पीपल वांट टू लिसन टू पॉलिटिकल कंटेंट. पीपल वांट टू लिसन टू पीपल engaging in brawls and engaging in arguments over political disagreements. तो उसकी वजह से whatever your content regime या whatever your platform philosophy is, तो it suffers. At Infer we try and not engage in political content curation, but it becomes a necessity at times. Obviously वो खैर जहाँ पे बहुत ज़्यादा requirement होती है वहाँ पे करते हैं, but we try and purposely avoid it because
it's not what we want to do. There are a lot of people that are doing political reporting very effectively. Mm-hmm. We don't want to go into that space. Yeah. Uh, we want to stick to informative explainers. We have some very novel things going on. So yeah, there's that, but it's a tough sell. दूसरी चीज़ that I wanted to know, and of course that will be my conclusive question to you as well, कि what are the ethical considerations involved in the practice of narrative building, especially जब जहाँ बात आती है representation की, accuracy की और accountability की, especially when you know कि fact checking का किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, तो how do you put this all together? So to answer your first question, international trends, हमारे information space is a very mixed bouquet. काफ़ी दफ़ा we've seen के internationally जंग चल रही है कहीं पे. We don't tend to care. Obviously we have our own problems, we have our own infighting going on, हमारे अपने इतने सारे मसाइल हैं. We tend to care about two things. We tend to care about something that has some entertainment value, one, Okay. or something to do that binds us together as Muslims. Okay. For instance, this whole Israel-Palestine war, इसके अंदर हमारी एक बहुत ज़्यादा जो अपनी personal investment है as Pakistanis, that is the fact that they belong to the same community, the same religion. Obviously it's a tragedy, but जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दुनिया में और भी जगह पे चल रहे हैं अभी, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. वो उसका स्केल बहुत ज़्यादा है, उसकी जो वो है ओवरऑल the depth of the conflict is obviously it's too much. But हमारा उसके अंदर जो स्टेक है वो ये है कि we're of the same Muslim brethren. In general, that's how the information It's space perceived, responds. yes. Um, उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेंड्स में वी टेंड टू रिस्पॉन्ड टू थिंग्स दैट कंसर्न अस. मतलब अभी लेट्स से द यूएस सेनेट में एक हेयरिंग चल रही थी दैट हैड टू डू विद द पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान. So that got our information space riled up. But US Senate में daily hearings होती हैं, we don't हर really वक्त care हो about रही that. हर होती वक्त ही हो हैं, रही होती है. exactly. So we usually care about things that concern us or something that happens right across the border. So generally trends, global trends इतना ज़्यादा हमें affect नहीं करते. We have national trends every day. We have a national topic of conversation that cohesively binds the information space, Pakistan's information space together. It can be a meme, it can be a viral reel, it can be a फजूल किस्म का कोई trend. Our people have a lot of time. हम लोग Clearly. we try and engage in everything, every sort of challenge and stuff like that. तो कंस्ट्रक्टिव डिबेट कम ही होती है नेशनल लेवल पे, बट नेशनल लेवल पे ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. बहुत ज़्यादा हम फॉलो करते हैं. इंटरनेशनल ट्रेंड्स के साथ हमारा यूजुअली डिस्कनेक्ट रहता है, इतना ज़्यादा हम लोग नहीं कर रहे थे क्योंकि बस जैसे फॉर इंस्टेंस इंटरनेशनली when the Russia-Ukraine war started, तो इंटरनेशनली हर इंफॉर्मेशन स्पेस जो है वो उसमें एंगेज थी. मेन स्ट्रीम मीडिया भी, डिजिटल मीडिया भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग इन्फ्लुएंसर जो हैं लगे हुए थे सारे. हमारे यहाँ पीपल डिड नॉट रियली इतना ज़्यादा कोई लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आर then Prime Minister had visited Moscow the same day. Exactly. So that was the only point of concern for Pakistanis that actually came under discussion on information space. उसके अलावा Russia-Ukraine war was not too much of a problem for us. Kashmir, anything that happens in Kashmir by India, we tend to engage with that, but that is something that directly affects us. तो उसके अलावा तो we're not really, not to my understanding, we don't really engage in global trends as much. All right. And Yeah. of course on the ethical considerations On the of ethical considerations of trying to cater to sensibilities, we've come a long way with that. If you remember our mainstream media, legacy media में हमारे यहाँ we've seen a terrible time during the war of terror, where there were no ethical considerations. You would go into a victim's house and you would ask them कि जी आपकी पूरी फैमिली मर गई है, everyone has passed away, क्या फील कर रहे हैं आप, सही है. there would be reporters जो जाके कब्र में लेट जाएंगे. there would be reporters जो कि जिनको पता नहीं होगा कि स्पॉट रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग किस तरह हो रही है. they would ask heinous questions. वो ठीक है, they were just trying to do their job without any without any training or without any. उस टाइम के जो
ethical considerations थे वो शायद इतने strong नहीं थे इतना. We've come a long way from that. I feel like even on digital media, people now are very mindful of how what they say affects other communities or other people. Or mainstream media में खास तौर पे it's very it's a tight noose now. And we try and not engage in things that affect communities, at least communities या individuals को directly slander नहीं किया जाता, target नहीं किया जाता उस तरह, जो कि sentiments की हम बहुत basically ख्याल सही. रखते हैं. In terms of how we engage in international ethical considerations, for instance, we while reporting on the Israel-Palestine conflict, it's very, very difficult to remain in a center and try and only report on what is going on. Absolutely. Obviously, what happened what has happened since then is something that the world has never seen. But our ethical considerations bind us to report on the number of casualties that have taken place, the number of aggressions by the occupation. IDF, yes. हमें ये पता है कि अभी एक दुनिया में अब जो इजरायली नैरेटिव था हमेशा से, एक वो जिसको कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट जो है वो जूइश लॉबी का नाम देते हैं, वो दैट नैरेटिव इज दैट प्रीकंसीव्ड नोशन इज नाउ ब्रेकिंग. So it allows us more space to be critical of what Israel has Is done or actually is doing, doing. yes. Obviously, social media platforms are not allowing it. हम जो मर्जी narrative propagate करना चाहते हैं वो चीज़ shadow ban हो जाती है, या ad reject हो जाता है, या it basically keywords Accounts जो हैं वो suspend हो जाते हैं. account suspend हो जाते हैं सारा कुछ. तो we're trying to stay in the middle there. We're trying to not be biased in our reporting, but it's very difficult when all we face is backlash from Absolutely. the legacy media and the social media platforms. And the Social media platforms platforms are themselves. continuously fighting back. So that's I'm not really sure of what ethical considerations there are while reporting in Pakistan. Insidiously, we have changed a lot in our information space. We tend to consider sentiments and communities. But in international, the international information space, you've seen interviews. Piers Morgan करता है. Yeah, or there are people who are, let's say, tilted towards Israel, and the kind of narrative that they try and build from the get-go while they have their guests, so they try and put people on the spot. Say Absolutely. immediately from the get-go, Immediately. na, do you condemn Hamas? Foreign say immediately. That sort of, एक तो it taints your whole idea of impartial journalism or whatever it is that you're trying to pull, and it immediately shines a light on what Trying your to do. bias is. But what it also does is कि even if you want to have an ethical conversation after that, you can't, सही. because you've made yourself a party. तो जो ethical considerations हैं वो in terms of programming and खास तौर पे people who have built a name for themselves, वो उसको बहुत ज़्यादा उसके basically bulldoze कर रहे होते हैं. But in general जो new structures हैं, they're just trying to do their jobs. कहीं ज़ाहिर है there are financiers and backers and states जो कि उसको influence करती हैं, but in general जो the most unethical that people get are actually anchor persons who are trying to drive The mass opinions. conversation, वो steer mass the opinion जो है वो conversation. form Yeah, कर yeah, रहे yeah. होते हैं because they have, जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि उनकी बहुत ज़्यादा massive followings होती हैं, तो वो from the get go ही एक चीज़ establish कर देते हैं, back other people in a corner, and that sort of tilts a conversation to a point where you cannot have an impartial discussion anymore. एंड ये अब ट्रिकल डाउन इफेक्ट है. आपने एक प्रोग्राम है जिसका एक बबल है, एक लेट्स से पॉपुलैरिटी एको चेम्बर है, वो पॉपुलैरिटी एको चेम्बर जो हैं वो बहुत सारे हैं, एंड देन दे मेक अप अ मैस परसेप्शन. तो वो मैस परसेप्शन ये लोग बहुत ज़्यादा बिल्डअप करने की, देयर इज दिस गाय बेन शपीरो डज अ डिस्पिकेबल जॉब. अब वो खैर हमारा ओपिनियन बन गया उसके बारे में बिकॉज ऑफ द फैक्ट
of because of what he does and what he says and how he says it. So you can watch a news channel all day, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट आप देखते रहें, उसकी जो रिपोर्टिंग है, हेडलाइंस है, वो आप देखते रहें, यू वुड नॉट बी एज अफेक्टेड फॉर 24 hours as you would be watching 2 minutes of Ben Shapiro's monologue, or Piers Morgan for that matter. You see, so that is what global polarization has done to the information space, and trying to have ethical considerations in a polarized environment like that, where globally there are poles for different conflicts, and then we have our own poles. It is a difficult job. I think it's gonna get quite interesting जैसे time आगे आता जाएगा with as the technology advances as well, and how these platforms are going to grow Yeah. with that technology. That being said, thank you so much for your time, Talha. It was Thank you very interesting much. knowing how the space works now, how the shifts came about, and now let's see where it goes. Thank you very much. Thank you so much, everyone, for watching the show.